वन में एक में जो है वेकअप वेकअप का दूसरा प्रश्न है यह, विच वर्ड्स हैव सिमिलर वर्ड्स साउंड इन द पोयम। सिमिलर साउंड इन द पोयम, सिमिलर मतलब सेम आवाज की तरह। साउंड मीन्स क्या होता है? आवाज। साउंड मीन्स आवाज होता है। साउंड मीन्स आवाज। सिमिलर मीन्स मतलब मिलती जुलती। सिमिलर मीन्स मिलती जुलती आवाज। जैसे अब देखो डे, प्ले, तो ए वाई इसमें भी लास्ट में, ए वाई इसमें, और बोलने में भी डे प्ले एक समान लग रहे हैं लास्ट में। तो वैसे ही हमें छांट के इस पोयम से यह दिया हुआ था और इसको लिखना था। तो ट्रीज, बीच, बेड, हेड, आउट, अबाउट, शिप, चिप। ठीक, यह तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हमारी बुक में दिया है तीसरा क्वेश्चन जो है एक्टिविटी। क्या है? एक्टिविटी। हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, आप लोग बोलेंगे टीचर टीचर किसकी चार। तो जो इसमें नाम दिया मैं बोलूंगी वह नाम, फिर उसकी आवाज कैसी आती है वह आवाज आप निकाल के मुझे सुनाओगे। जैसे आप पूछेंगे टीचर टीचर किसकी चार, मैं बोलूंगी कैट या काऊ, कैट या बिल्ली, तो आप बोलेंगे म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ठीक है, करके दिखाए? करे? चलो पूछो। टीचर टीचर किसकी चार? काऊ। मधुमक्खी।